Hello you guys, welcome back to my channel Looks by YESHA. So this is the second look that I've created for Valentine's Day. To be very honest, Valentine's Day के लिए नहीं create करा है मैंने ये makeup look. I just love to create makeup looks चाहे occasion कुछ भी हो, Valentine's हो, दिवाली हो, होली हो, whatsoever it is. But obviously if you are going for a dinner date or something like that, so आप इस look को easily achieve कर सकते हो. It is a very easy to create this look. And if you want to know that how I have created this look, please keep on watching. एक disclaimer है कि आप कुछ भी चाहे तो skip कर सकते हैं. कुछ भी से मेरा मतलब है if you do not want to apply lenses, you can completely skip it. जैसे मैंने eyelashes skip करे क्योंकि मुझे तो कहीं नहीं जाना है, मुझे ये makeup create करके घर पे ही रहना है. So I just skip it. अगर आप चाहते हो lashes लगाना तो you can totally apply. If you want to avoid lip glosses, you can completely avoid that as well. And hairstyle मैंने simple ही रखा है, like I like open hairs most of the time. So आप चाहो तो tie hairs भी कर सकते हो. This look will go with each and every hairstyle. But before moving ahead, if you are someone new here, thank you so much for watching this video out. I generally post about affordable makeup tutorials and sometimes fashion as well. So if you are interested in watching those kind of content, kindly hit the subscribe button and like this video if you really enjoyed watching this. Also if you felt that this video is informative for you. So on that note, let's just start the video. हमेशा की तरह मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, मॉइस्चराइज कर लिया है, सनस्क्रीन लगा लिया है. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद दिस इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स एंड आई एम अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई फेस to cancel out my dark circles, pigmentation around my mouth and here and there. I'm using here this age rewind concealer from Maybelline in the shade Caramel, and I'm blending it out with the help of Tam Beauty Blender. फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ LA Girl Pro फाउंडेशन इन द शेड नेचुरल. ये मुझे थोड़ा सा डार्क है, सो आई एम मिक्सिंग इट विथ दिस फिट मी फाउंडेशन इन द शेड फेयर, और ये ड्राई आउट ना करे. सो आई एम एडिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ फेशियल ऑयल एंड आई एम मिक्सिंग इट ऑल टुगेदर like this, and now I will apply this on my face. To highlight my face, I'm using here this Maybelline concealer in the shade 10. I'm applying just a little bit at inner and outer corner of my eyes, cupid bone, at my chin and little bit on my forehead just to highlight it. And I'm blending them all together. फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेक वर्की का लूज पाउडर विद द हेल्प ऑफ दिस पाउडर ब्रश. टेकिंग द प्रोडक्ट हियर एंड डस्टिंग एक्स्ट्राज ऑफ, and I will apply it underneath my eyes like this so that I will get no creases and my under eyes do set really well. Taking a little bit more and applying over my smile lines and upper eyelids. Now I'm using this Revolution Pro palette. This is a blush palette basically. I'm taking here this mauve shade and I will apply it over my eyelids. Outer crease पे मैं apply करूँगी just to create a base for my eye makeup. ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, so I'm just keeping it little sparkly and shimmery. I am picking up this purple shade from the Huda Beauty palette. This is a beautiful palette, you guys. It's amazing. थोड़ा सा अपने आईज़ को ओपन अप और पॉप अप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ Forever 52 का वाइट कोल पेंसिल. अपने आई लैशेस को कर्ल करूँगी मैं बिफोर अप्लाइंग मस्कारा. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स यू गाइज, यू शुड नेवर स्किप दिस. अगर आपकी भी आई लैशेस मेरी तरह बहुत ही ड्रूपी डाउन है देन. For mascara, I'm using here this Better Than Sex mascara from Too Faced, and I just love this mascara. You can see how my eyes are looking. It's looking really beautiful, isn't it? I am just brushing my eyebrows as I'm not doing anything more for them. They are pretty precise. And bronzer के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ Color Essence का this bronzer. Like हमेशा तो मैं यही यूज़ करती हूँ. This is for my personal use basically. And I'm taking this angular brush, dusting extras off. And now I'm applying it like this. You should always apply your bronzer like this and mix it really well. I'm using this Bobbi Brown highlighter. Oh my god, look at this, how gorgeous it is. I'm applying it over my jawline, cupid bone and thoda sa chin pe.
हाउ गॉर्जियस इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। ब्लश के लिए मैं सेम पैलेट यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन का, मिक्सिंग 2 शेड्स टुगेदर लाइक पीच एंड मॉव वन, एंड आई विल अप्लाई इट फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। मैं हाइलाइटर के ऊपर ब्लश लगाना पसंद करती हूँ सो दैट माई स्किन लुक्स मोर ड्यूई एंड नेचुरल। नाउ आई एम lining my lips with the help of this Forever 52 का liner, and now I am taking this Smashbox lipstick, shade मुझे याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, but I am not at all liking this. It's looking very much bright on my face. No, I'm using here this Smashbox liquid matte lipstick in the shade Stepping Out. This is a gorgeous nude shade, like you can see एक ही बार में इसने उस शेड को वॉश आउट कर दिया. इट्स सो स्टनिंग. इसका मिनी वर्जन मैं यूज़ करी थी सो दैट ये जल्दी फिनिश हो. स्विस ब्यूटी का ये लिप ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ बिकॉज दिस इज़ माई अल्टीमेट फेवरेट. इट्स सुपर अफोर्डेबल एंड गिव्स यू एन अमेजिंग रिजल्ट. आपके लिप्स बहुत ही ड्यूई एंड हाइड्रेटेड रहेंगे इससे. एंड टू फिक्स माई मेकअप आई एम यूजिंग योर दिस Maybelline makeup fixer. You should always apply your fixer like this, and I am done. Okay, so that's it for today's video guys. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो you already know that what all you have to do. So we will meet up real soon. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.